Hello and welcome back to yet another episode of the Third Man Cricket Show presented by CHAMPHUNT. और क्वालिफाई 2 चल रहा है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। और अब तक तो काफ़ी वन साइडेड रहा है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक निखिल और अंकित एग्री करेंगे मेरे से। सो दोनों को वेलकम करता हूँ। हाय निखिल, हाय अंकित, होप यू आर डूइंग वेल। और जितने भी लोग चैट में हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी वेलकम है। हाय श्री, आई कैन सी योर कमेंट ऑलरेडी। सो निखिल, अंकित, कैसा लगा? मतलब गेम का हाइप थोड़ा ज्यादा था बट उतना हाइप मिला नहीं हमें गेम से। Yes, I mean, because I'm audible. हाँ हाँ हाँ। Yeah. So if you see at RCB's point of view, वो तो चाहते थे आई थिंक कि ज़्यादा रन्स बन सकते थे बिकॉज ऑफ कोर्स एक बिग राउंड है तो सेकेंड इनिंग्स में यू वांट बॉलर्स टू गिव दैट लग्जरी बट आरआर वाले ये नहीं सोचेंगे कि यार हमें वन साइडेड या फिर वो तो चाहते थे कि वो डोमिनेट करे और अभी तक आई थिंक दे रियली डिड वेल बिकॉज एक समय ऐसा था कि रजत पाटीदार आई थिंक इफ ही कुड हैव बैटेड टिल द एंड या फिर दिनेश कार्तिकन तक खेलते तो 180 तो बन जाता बट आई थिंक अगेन कुडोस टू संजू सैमसन बिकॉज बहुत कम बार टॉस जीते और आज जब जीते आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज लंबे बाउंड्रीज है तो ऑफकोर्स एक चीज रहती है कि स्कोर बोर्ड प्रेशर बट इफ यू बैक योर बॉलर्स जिस हिसाब से गेंदबाजी एंड आई थिंक लुकिंग एट आरसीबी बैटिंग स्क्वाड आई थिंक या फिर बैटिंग 11 कह सकते हैं दे डिड रियली वेल आई मीन कुडोस टू द फाइव बॉलर्स बिकॉज किसी एक बॉलर का दिन खराब होता है जैसे चहल का था स्टिल दे मैनेज टू रेस्ट्रिक्ट देम बिलो 160 एंड अभी जिस हिसाब की शुरुआत है आई थिंक इट्स फेयर टू से आई थिंक इट्स वेरी difficult for RCB from here to bounce back. Fingers crossed if they do that. क्योंकि यही तो उम्मीद है अभी सिर्फ आप फिंगर्स क्रॉस कर सकते हैं या फिर नाखून का बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तू तू क्यों फिंगर क्रॉस कर रहा है? तेरे को मतलब आरसीबी नहीं से क्या यार आई मीन है? आई पर्सनली फील कि जो एमआई वाला गेम था उसके बाद जो भी हुआ आई पर्सनली वाज जस्ट इट वाज अ बिट स्ट्रेंज फीलिंग फॉर मी एज एन इंडिविजुअल. मैं तो कोई भी टीम जीते बट जो उतनी हाइप क्रिएट हुई आई थिंक इट वाज समथिंग कुछ ज्यादा लाइन क्रॉस हुए जो मैंने आरसीबी के इधर से देखा. और अगर मैंने तो काफी दोस्तों से इवन शो पे भी ये कहा है कि आरसीबी क्वालिफाई करेगी ये अलग बात है बट मैं पर्सनली चाहता कि इवन मैं एक आरसीबी का फैन होता तो मैं चाहता था कि दे शुड फिनिश इन टॉप टू बिकॉज दे नीड दैट लग्जरी कि एक गलती करे तो एक दूसरा चांस मिलता. अब भी जो ये गलती हुई है उनसे क्योंकि कार्तिक का बल्ला नहीं चला तो दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम देयर बैटिंग ऑर्डर हैज फेल्ड टू. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. निखिल, क्या लगता है? नहीं, काफ़ी वन साइडेड एनकाउंटर रहा है और दो तीन बड़े मिस्टेक्स मेनली आपके जब मेन जो प्लेयर्स है जो सीनियर प्लेयर्स है जो पहले रह चुके हैं ऐसे सिचुएशंस में ऐसे नॉकआउट गेम्स में वो जब परफॉर्म ना करे तब बहुत प्रॉब्लम होता है. हमने विराट कोहली के बारे में देखा कि वो ऑलमोस्ट लाइक अ नथिंग शॉट था जो उन्होंने खेला प्रसिद्ध कृष्णा अगेंस्ट फफ ड्यूप्लेसी भी. he never looked like he got going और एक पॉइंट के बाद स्ट्रगल के बाद आउट हो गए. मैक्सवेल का बल्ला काफी शांत रहा है पिछले कुछ गेम्स से और दैट हैज हैम्पर्ड देम क्योंकि लास्ट ईयर के मेन दो पिलर्स थे एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल. मैक्सवेल ने इस साल भी अच्छा किया है और बॉल से भी काफी अच्छा किया है बट जब क्रंच सिचुएशंस की बारी आती है आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स से आपको रन्स मिले आपको बैकिंग मिले और रजत पाटीदार के लिए बहुत अच्छा होता अगर एक कोई भी जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल है वो उनके साथ खड़ा रहता तो उनका भी स्ट्राइक रेट इतना नहीं गिरता बट विकेट्स गिरते रहे इसीलिए उनका भी स्ट्राइक रेट गिर गया उनका भी कॉन्फिडेंस गिर गया. और हर बारी आप नहीं छोड़ सकते दिनेश कार्तिक पे. उन्होंने बहुत लाइक ऑलमोस्ट ही इज नेल्ड एवरी फिनिश. ऐसा नहीं है कि उन्होंने सभी किया बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्होंने फिनिश किया है बट व्हेन द डे ही डज नॉट फिनिश ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू क्रम्बल कंप्लीटली. तो बैटिंग में देर 50-20 रन शॉट डेफिनेटली और वो अभी हर्ट हो रहा है उनको. और जॉश हेजलवुड से ओपन ना करना और शहबाज अहमद को ये ओवर दे दी जहां पे पूरा कोर्स ही चेंज हो गया और शायद वो शहबाज की ओवर ना होती तो इतना वन साइडेड अफेयर नहीं लगता बट बटलर ने पूरा फायदा उठाया फील्ड अप होने का और बॉल टर्न ना होने का. या कंप्लीटली एग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू सेड. जैसे मुझे भी लग रहा है 20 कम से कम 20 रन शॉर्ट है आरसीबी क्योंकि एक पॉइंट पे 14 पॉइंट सम ओवर्स या 15 पॉइंट सम ओवर्स 130 फॉर 3 थे. उसके बाद आई थिंक 6 ओवर में कुछ तो 30-35 रन ही बने. सो आई थिंक काफी हर्ट हो रहे होंगे आरसीबी ये मोमेंट पे. और
डिसमिसल के बारे में आगे बात करेंगे, एक स्कोर अपडेट कर देते हैं। राजस्थान रॉयल्स 68 फॉर 1 इन 6.2 ओवर्स, चेजिंग 158। और काफी लोग कमेंट से भी जुड़ गए, मतलब शशांक जुड़ गए, कविश जुड़ गए। कविश ने अच्छा स्टैट बताया, जस्ट जॉस हैज नाउ स्कोर्ड द थर्ड मोस्ट रन इन अ सिंगल आईपीएल सीजन। या आई थिंक ये आफ्टर विराट कोहली एंड कौन था और एक, यार याद नहीं आ रहा। आई थिंक डेविड डेविड वार्नर वाज, या डेविड वॉर्नर। तो या बट आई थिंक गणेश जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि वनिंदु एंड हर्षल पटेल विल बी क्रूशियल। यस, आई थिंक सो दे विल बी क्रूशियल, बट डू दे हैव द रन्स टू डिफेंड इज द क्वेश्चन, या क्योंकि इतने लीक कर दिए पावर प्ले में। एंड आई थिंक दिस वाज द गेम प्लान बाय राजस्थान रॉयल्स की हर्षल और वनिंदु को इतना नहीं मार पाएंगे। तो आई थिंक जितना पावर प्ले का आप यूज कर सकते हो अच्छे से तो कर लो। एंड आई थिंक राजस्थान हैज डन रियली रियली वेल इन दैट एस्पेक्ट। एंड now Sanju Samson has to play a captain's role, sensible innings. We all expect him to do well season after season, but कहीं ना कहीं से उनके शॉट्स थोड़े हर्ट करते, गलत टाइम पे गलत शॉट्स खेल जाते हैं। होपफुली रन अ बॉल चाहिए लिटरली अभी। तो आई थिंक कुछ गलती नहीं होनी चाहिए उनके बैट से। हाय शशांक भाई भी जुड़ गए। पटेल हैज टू कम ऑन टू बोल, यस। तो जैसे निखिल ने कहा था कि विराट कोहली का जो डिसमिसल था वो काफी कॉमन डिसमिसल रहा है, मतलब जिस तरीके से आज आउट हुए वो ये सीजन में काफी बार वैसे आउट हो चुके हैं। तो अंकित क्या मतलब, क्योंकि मेरे को अभी तक नहीं लग रहा कि विराट कोहली इज बैक इन फॉर्म। यस, वो बीच में एक आध झलक दिखती है, जैसे लास्ट गेम में दिखेगी, लास्ट टू लास्ट गेम में। बट आई स्टिल डोंट सी द ओरिजिनल विराट कोहली विच वी आर ऑल नोन टू सी। यस आई मीन बिकॉज आई थिंक आज क्योंकि फर्स्ट हाफ में उन्होंने नंबर 3 पे खेला था, सेकंड हाफ में डिसाइडेड टू बैट एट एज एन ओपनर, और वो एक अच्छी स्थिति भी थी क्योंकि रजत पाटीदार ही समवन हु कैन एंकर द इनिंग्स रियली वेल। बट अभी तो अलग अलग तरीके से आउट होना, तो आई मीन देर इज समथिंग अ बिट ऑफ प्रॉब्लम वी कैन से इस हाफ में, बिकॉज वी ऑल नो इज अ बिग प्लेयर। आई थिंक आई एम श्योर ही विल कम बैक स्ट्रॉन्ग, बट ये सीजन शायद भूलने जैसा ही है। और शायद आरसीबी फैंस के लिए आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अगला 1 घंटा आरसीबी फैंस हो, विराट कोहली हो फील्ड में है, ऑफ कोर्स यू हैव दैट ऑल दैट एग्रेशन दैट माइंडसेट की कर सकते हैं। बट बात तो ये भी सच है कि आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए, बिकॉज ताबड़तोड़ शुरुआत उनको पावर प्ले में मिली, अगर 60 रन लग जाता है ना तो जायसवाल आउट हुए तो उस बात का आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज अभी आपके मेन बैटर्स जो है संजू सैमसन है, देवदत्त पडिक्कल ने अच्छा किया है, तो दे नीड टू जस्ट एंकर इनिंग्स या फिर कैलकुलेटिव रिस्क एट सर्टन स्टेजेस, वही कह सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज ये बात सिर्फ विराट कोहली की नहीं है, फिर ये बात भी है ना कि फाफ डू प्लेसिस नहीं चले, ग्लेन मैक्सवेल ने जिन्होंने पिछले साल 500 से ज्यादा रन बनाए थे, उनका भी तो बल्ला शांत रहा है। तो काफी सारे सवाल है, बट होपफुली नाउ दिस इज द लास्ट मैच, यू हैव टू गिव योर एवरीथिंग। अगर फाइनल जाना है तो यही वो शाम है जहाँ पे आपको एक छाना है। अभिनव, यू आर ऑन म्यूट। यस, यू आर ऑन म्यूट। या जॉस बटलर आई थिंक काइंड ऑफ अनस्टॉपेबल है अभी, 54 ऑफ 25। बहुत जल्दी में मैच खत्म करने के लिए 7 ओवर में 77 कुछ तो स्कोर बन गया राजस्थान को ऑलरेडी। तो आई थिंक इतने 80 रन चाहिए और 13 ओवर में, आई थिंक विच इज प्रीटी गेटेबल। और प्रेशर जो क्वालिफायर का प्रेशर होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से अभी टीम के ऊपर। ट्रीट इट एज अनदर गेम, जैसे सब कैप्टन भी बोलते हैं, और ड्यूरिंग टॉस एज वेल। और आई थिंक राजस्थान इज ऑन कोर्स टू रीच देयर सेकंड फाइनल। आई थिंक 2008 के बाद पहला ही फाइनल है राजस्थान का ये। सो आई थिंक बहुत बहुत मेमोरेबल होगा ये ऑल द राजस्थान फैंस के लिए भी। और क्या बात करेंगे अपन। यस, जैसे कि स्कोर अच्छा था आरसीबी का जब वो पहले इनिंग्स में बैटिंग कर रहे थे, जैसे मैंने कहा था, बट अचानक से स्लो डाउन हो गया। जैसे गणेश कह रहे हैं कि बैटिंग गॉट स्लोड डाउन क्योंकि ओबेड मैकॉय, देन युजवेंद्र चहल का जो फाइनल ओवर था, एंड प्रसिद्ध कृष्णा इन द एंड, लिटरली जब आप विकेट्स ले रहे हो, आप ओवर बाय ओवर विकेट्स आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि एक भी ओवर में विकेट नहीं आ रहा था। आई थिंक दैट इज द रीजन आरसीबी हैज फॉलन वेल शॉर्ट ऑफ द टारगेट व्हिच दे वर एक्सपेक्टिंग, निखिल। एंड या जी जी हाँ, बिल्कुल। और प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि आप जब बॉल्स कंज्यूम करते हो तो यू नीड टू किक ऑन, क्योंकि सबको पता है फ्रेश विकेट है, अच्छा खासा बाउंस है, अच्छा खासा स्विंग है, तो कंसिडरेबल होगा कि अगर पावर प्ले में थोड़े से ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम भी कर जाए तो भी आप एंड तक रहना और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ऑन द विकेट इम्पॉर्टेंट था। और बेसिकली इट वाज अ गेम ऑफ पुटिंग वन बॉलर अंडर इमेंस प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान रॉयल्स हमेशा 5 बॉलर के साथ ही जाते हैं। आई पर्सनली डोंट कंसिडर रियान पराग एज अ बॉलर। वो एक मेकशिफ्ट बॉलर है जो आपको एक या एक आध ओवर अगर वो लकी हो गए तो निकल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन कि उनको एक ओवर निकालने को बोला और ही हैज गॉन फॉर 13 14 मे बी 15 16 रन्स।
So the game plan was should have been to put a lot of pressure on one bowler so that Sanju Samson has to compensate that 1 or 2 overs with some of Riyan Parag, और आपको तब मौका मिलता कि आप उन पे कड़ा प्रहार करें. और आई थॉट ओबेन मकॉय वाज द कैंडिडेट कि आप प्रेशर बना सकते थे उनपे, क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे पहले गेम में अगेंस्ट जीटी. उन्होंने विकेट तो लिए, बट वो जो स्लोअर बॉल या फिर जो बॉल पटक रहे थे पिच पे, that was a sign कि he was a little underconfident coming into this game. So they could have targeted him, but as I said, if even if one of Maxwell or Faf du Plessis or Virat Kohli would have sticked and stayed there with Rajat Patidar, it would have been a story of the eliminator which happened at Eden Gardens, so that Rajat used up some of the deliveries at the start, but eventually made up for them at the end. So that's what the game plan should have been, and it didn't really come off for them this time. Yeah, completely agree. And I think जैसे निखिल ने स्टार्ट में भी कहा था कि रजत पाटीदार के साथ एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल रहता दूसरे एंड पर, तो आई थिंक फॉर श्योर स्कोर थोड़ा ज्यादा रहता. एंड वो टाइम पे आई थिंक वन ऑफ द प्रोफेशनल्स दे शुड हैव स्टेड काम कि यार अकेला खेल रहा है, लेट्स नॉट थ्रो आवर विकेट्स अवे. क्योंकि आई स्टिल फील ग्लेन मैक्सवेल कुड हैव taken more responsibility. He was batting really well, but literally threw his wicket away. It was just one fielder at I think fine leg boundary, and वहीं पे वो catch दे गए. तो I think much is expected from Glenn Maxwell, जो RCB fans ने retain किया था उन्हें. So I think more is expected, क्योंकि हम कहते हैं कि यार बाकी टीम्स ने रिटेन करे प्लेयर बट वो परफॉर्म नहीं कर पाए पूरी तरह इस आईपीएल में. ग्लेन मैक्सवेल फॉर मी आल्सो फॉल्स इन दैट कैटेगरी. यस, जैसे आई थिंक निखिल ने कहा कि बॉलिंग बचा रही है उन्हें, अगर आप वो बॉलिंग हटा दें तो आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल हैज हैड अ वेरी वेरी पुअर सीजन. और लेट्स बी ऑनेस्ट, ग्लेन मैक्सवेल इज नॉट retained as a bowler. He is more retained and as a batter. Ankit? यस, आई मीन डेफिनेटली, बिकॉज पिछले साल तो मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की थी और वही इंडियन पिचेस थे फर्स्ट हाफ में, एंड ही बैटेड विथ रियली अ गुड मैच्योरिटी, क्योंकि वहाँ पे विराट कोहली थे, एबीडी थे, उनको एबीडी के आगे प्रमोट किया गया था. सो आई थिंक देयर वर एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम हिम इन दिस सीजन एज वेल, बट आई थिंक इस साल इट हैजंट रियली स्टूड अप फॉर हिम एज एन इंडिविजुअल. और आरसीबी फैंस दे हैव अ रीजन टू वरी, बिकॉज पिछले 2 साल तो आप एलिमिनेटर में ये फर्स्ट से 3 साल आप एलिमिनेटर के थ्रू आए. अभी फर्क ज्यादा नहीं है, बट बिकॉज द फैक्ट इज यू वांट टू मेक इट टू द फाइनल. आपका सपना है वो ट्रॉफी जितना, ईसाला कप नाम दे जो उनका टैग रहा है. दैट्स नॉट गोना बी गेटिंग पॉसिबल इन द क्वालिफायर टू, बिकॉज आज का मैच शायद राजस्थान, बिकॉज राजस्थान की भी सिमिलर स्टोरी है, काफी साल से प्लेऑफ्स नहीं हो रहे, मिस हो रहे थे, बट अभी काफी साल बाद एक कंसिस्टेंसी, एक अच्छी स्क्वाड मिली है. बट एक और चीज है ना, आज जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे बैटिंग के बारे में कि महिपाल लोमरेर को दिनेश कार्तिक के आगे भेजा गया था, और आई थॉट कि शायद ये आएंगे और ही विल ट्राई टू हिट द बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, बट द फैक्ट इज वो स्लो खेले. तो अगर वो एंकर इनिंग्स करने वाले थे तो शायद आपको दिनेश कार्तिक को भेजना चाहिए था, बिकॉज दिस आर द स्मॉल थिंग्स विच मेक अ बिग डिफरेंस. बिकॉज वो इंटेंट दिखा नहीं एक्चुअली महिपाल लोमरेर से. आई थॉट ही विल कम एंड जस्ट टारगेट एनी ऑफ द बॉलर्स, बट दैट डिडंट हैपन. एंड सडनली जहाँ पे 170 180 तो बनने चाहिए थे, वहां पे आप निपट गए 160 के नीचे. सो वापस वही साला कप नाम दे, शायद हमें अगले साल भी सुनने मिले, बिकॉज दिस ईयर सीम्स टू बी एंडिंग फॉर देम इन द क्वालिफायर टू इटसेल्फ. और मेरे को पता क्या लगता है कि आरसीबी प्रेशर सिचुएशंस में बिग मैच जो हम कहते हैं, बिग मैच टेम्परामेंट, वो नहीं झेल पाते. पता नहीं फॉर सम रीजन व्हाट इज द सिनेरियो. ये अभी मैच खत्म हुआ नहीं है, बट आई एक्सपेक्ट राजस्थान टू, अगर इजीली नहीं तो जैसे तैसे लोग जीत जाएंगे एंड में खींच खींच के, व्हाट आई एक्सपेक्ट. सो आई थिंक आरसीबी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 was a season against CSK in Ranchi, when they lost a qualifier too, right? So I think RCB after coming so far in the tournament, and एक टाइम पे तो लग भी नहीं रहा था कि शायद प्लेऑफ्स खेलेंगे वो. So I think RCB have themselves to blame to be in this situation. निखिल? जी हाँ, बिल्कुल. एंड if we have seen in the past 3 years, only 2021 was the one year where they qualified like
satisfactory qualification. They didn't need anyone else for them or any other results to go their way. In 2020, we saw that they lost 4 on the bounce, went to the eliminator, and then lost the eliminator as well. And this year, despite of winning 5 games in the first 7 matches, you do not expect someone like RCB who've won these many games and have such a potential in their squad to depend on other people. And the way they celebrated that win of Mumbai just shows that they didn't have much confidence in them to do it on themselves. Obviously, luck is a factor which you don't have a control on. When it's on your side, you celebrate. When it's not on your side, you grim about it. That why is it not on our side? But as you talked about the big match temperament, that's seriously missing because they're missing a big match player. बिकॉज मैंने तो बहुत कम प्लेयर्स देखे हैं जो आरसीबी के लिए प्लेऑफ्स में स्टेप अप किया है, जिन्होंने एक ही थे एबी डिविलियर्स, जिन पे पूरे सीजन ही इतना इतना भार दिया जाता था या फिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि ही एट द एंड वुड वेयर आउट. एलिमिनेटर में हमने 2020 में देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. लास्ट ईयर ही कुड नॉट बिकॉज ही even if there was Maxwell, he had enough responsibility of wicket keeping, then batting at number 5, doing that role of middle to lower order finisher. तो इतना उनको wear out किया जाता था in the league season that in the knockouts he wouldn't have the gas to win a game. और जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं विराट कोहली hasn't stepped up at all in a knockout game. How much ever great a player he is, he has not stepped up, and you expect a player of his quality to put a stamp the way he put a stamp against the Gujarat Titans, the way he was batting. You expect him to do that in a crunch situation, in an even more crunch situation where the final is on the line, the cup is on the line. So हर बार कैरी नहीं हो सकते आप, और just यही स्टोरी रही है उनकी लास्ट 3 सीजन्स की. क्वालिफाई हुए पर बिग मैच टेम्परामेंट कंप्लीटली मिसिंग. Yeah, completely agree. And on that note, I think Rajasthan have decided to end this game in 15 overs. 61 needed from 67 balls, 97 for one. Josh Butler is playing on 61 of just 30 balls. So I think हम ये गेम में हमारे पास राजस्थान की जितनी हम अच्छी बात कर लें, बट बहुत ज्यादा बातें आरसीबी के बारे में जो करनी चाहिए. ऐसा लग रहा है कि bowling, yes, Harshal Patel has bowled just 1 over till now, but I think it could be too late for RCB in this game. और एक चांस मिलता है, you do or you die, simple as that in this game, or especially in qualifier 2, क्योंकि आपके पास एक राजस्थान yes had that extra comfort by finishing top 2. तो क्या लग रहा है कि मतलब जैसे परसों ही खेले थे आरसीबी की टीम at the Eden Gardens, and Rajasthan had arrived Ahmedabad a day earlier. So I think क्या लगता है अंकित, तो वो हेल्प करता है क्या, मतलब एक एक्स्ट्रा डे ऑफ और मे बी समथिंग लाइक दैट, या रिदम ब्रेक हो जाती है एक्स्ट्रा डे ऑफ से, ऐसा कुछ? डू यू फील समथिंग लाइक दैट हैपनिंग विद ईदर साइड? See, I think IPL का इतिहास रहा है apart from that 2016 जहाँ पे SRH from eliminators and all they managed to win a trophy. उसके वाला ये काम कोई नहीं कर पाता कि आप नंबर 3 नंबर 4 से ट्रॉफी जीतो, बिकॉज एक चीज होती है अच्छा क्रिकेट खेलना और दूसरी चीज होती है मोमेंटम. और वो मोमेंटम अक्सर हवा की तरह होती है, आपको दिखती नहीं है बट महसूस होती है. एंड आई थिंक ये चीज होती है कि आरआर ने डेफिनेटली वो मैच हारा, बट ये हमने कितनी बार देखा है कि इवन अगर आप क्वालिफायर 1 हार देते हो, मैंने CS 2019 में हमने देखा है, 2018 में देखा है कि वो टीम किसी तरह फाइनल पहुंच ही जाती है. जो टॉप 2 में जो क्वालिफायर आता है, somehow they manage to go to क्वालिफायर. सो वो मोमेंटम की भी बात होती है, बट दैट्स द लग्जरी, बिकॉज वो रेस्ट की भी बात होती है. बट जो एलिमिनेटर के थ्रू जो आता है 3 मैचेस तो जीतना बहुत मुश्किल है. और जिस हिसाब से आरसीबी इस साल प्लेऑफ्स में आई, I think it was a bit tough. Of course, they played that quality game against Lucknow, but big games का experience I think they needed. And I think Faf की भी इनिंग समझ नहीं आई, क्योंकि 26 बॉल में 25 not expected from him. A big player, इतने सारे 14-15 मैचेस he has played in playoffs, एक्सेलरेट ही नहीं कर पाया. और अभी काफी सारे you have points कि आप देखते हो सीजन जैसे खत्म होता है, रिव्यू करते हो कि कहाँ गलत गया.
बट द फैक्ट इज आरसीबी के आप सारे अल्फा मिल्स देख लो, विराट देख लो, फाफ टू प्लेसिस देख लो, या फिर ग्लेन मैक्सवेल देख लो, तीनों नहीं चलेंगे तो बाकी कोई भी आंसर थे वो आप अपनी जीतने वाले हैं, क्योंकि हर बार 8 प्लेयर्स तो आपको नहीं लेके आएंगे ना, आपके बिग प्लेयर्स को भी। और यही कहानी में आप मोहम्मद सिराज को भी जड़ सकते हैं, बिकॉज बहुत एक्सपेक्टेशन थी आरसीबी फैंस की, आरसीबी की मैनेजमेंट की, बट ही टू डिडंट स्टेप अप, सो दे हैव तो लॉट टू थिंक। मतलब पता है क्या, इन शॉर्ट यू कैन से दैट देयर बिग प्लेयर्स हैवंट स्टेप्ड रेगुलरली। या हम ये नहीं कहते या कि आप हर मैच में चारों से एक्सपेक्ट करो कि द बिग थ्री फाफ ग्लेन एंड विराट कि आप हर मैच में रन बनाओ, बट एटलीस्ट 2 आउट ऑफ दिस 3-4 पीपल दे हैव टू डू इट रेगुलरली। ऐसा जरूरी या नहीं है कि यार हर मैच में आपको विराट कोहली को रन बनाने पड़ेंगे, हर मैच यस में आपको सिराज को विकेट लेने पड़ेंगे। अगर आपका एक अच्छा बैट्समैन चल जाता है या दो अच्छे बैट्समैन चल जाते हैं अलॉन्ग विद रजत पाटीदार या शाहबाज अहमद जो बीच बीच में अच्छे इनिंग्स दे पाते हैं, तो आई थिंक दैट प्रीटी मच सॉल्व्स योर इक्वेशन कि आप एटलीस्ट दो ट्रू। विन्स तो और आराम से ऐड कर पाएंगे। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आरसीबी मिस्ड दिस सीजन। बट लाइक निखिल सेड कि जो मुंबई इंडियंस का सेलिब्रेट करना, वो आई थिंक वहां तक बात आनी ही नहीं चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि क्योंकि क्या है ना अभिनव सर की बात, जब आप ये बात आपको तब तक अच्छी लगती है जब तक आप जीतते हो। जिस मोमेंट पे आप हारेगे ना, वो 2 दिन पहले हमने सेलिब्रेशन किया था, वी वर टू एक्साइटेड, एवरीथिंग वाज इन आवर फेवर, अभी वो बात चुके हुई है, अभी सोशल मीडिया एंड ऑल यू नो, और वो क्रिटिसाइज तो नहीं होगा, बट यू नो पीपल विल टॉक अबाउट दैट इवेंचुअली। आरसीबी कैंप में भी ये यार हम लोग 2 दिन पहले ये पार्टी कर रहे थे, वी वर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री, बट द मोमेंट यू लूज एनी मैच, और ये तो क्वालिफायर 2 है विच इज नॉकआउट, दैट्स इट, खेल खत्म। तो क्वालिफायर 2 तक ही वो सेलिब्रेशन काम आया आपका, नाउ यू हैव टू जस्ट क्लोज द बुक एंड गो बैक टू होम। या और अगले साल आई और थिंक। अभिनव भैया, हाँ बोला। मेन बात क्या होती है पता है कि फैंस, टीम या फिर प्लेयर्स कभी कभी मजाक के लिए बोल देते हैं कि जैसे फाफ ने बोला या फिर विराट ने बोला कि ओवर टू यू रोहित, या फिर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एम आई। बट when a franchise turns this into a campaign कि उन्होंने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को चेंज किया फॉर गेम सो दैट दे क्वालिफाई। सो ये आपको क्रिकेट में बहुत कम ये वर्ड यूज करना पसंद होता है, जो है डेस्परेट, और वो दिखे क्योंकि उनके एक्शंस, योर एक्शंस यू रियली डिफाइन यू। और वो डेस्परेट मूव लगा मेरे को कहीं पे, जब उन्होंने वो कैंपेन शुरू किया दैट रेड टर्न्स ब्लू, रेड हैज बीन योर आइडेंटिटी एंड यूर टर्निंग इट आउट फॉर जस्ट वन गेम which you don't know will go your way, not will go your way। और obviously मुंबई इंडियंस आपके लिए नहीं खेल रहे, मुंबई इंडियंस आपके लिए आप क्वालिफाई हो इसलिए नहीं खेल रहे, वो बस खेल रहे कि दे वांट टू फिनिश इट वेल, जो सीएसके का भी था कि they wanted to finish well against Rajasthan, they couldn't, but MI eventually did finish well। बट ये थोड़ा सा एक वर्ड है जो डेस्परेट है, वो आप यूज नहीं करना चाहते। सो आई थिंक दे रियली नीड टू थिंक दिस थ्रू। और ऑब्वियसली अगर आप इतने गेम्स, आपके पास 14 गेम्स है, उसके बाद भी आपको अगर दूसरी टीम पे रिलाय करना पड़ रहा है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको पता है एट द बैक ऑफ द माइंड कि आप यू आर नॉट दैट गुड इनफ to qualify, just because you've won or just because you've got that cushion at the start by winning 1 or 2 extra games. That's the reason why you are qualifying right now and not any other team। या कंप्लीटली एग्री। एंड आई थिंक वो जो सोशल मीडिया वाली जो बात करी ना, आई थिंक दैट लुक्स प्रीटी गुड फ्रॉम अ न्यूट्रल फैंस पॉइंट ऑफ व्यू जो क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करते, बट लाइक पीपल हु आर एनालाइजिंग क्रिकेट एवरी डे लाइक वी डू, आई थिंक आरसीबी हैड अ गुड साइड टू qualify very easily। And Sanju Yes. Samson is on a roll once again, hitting some huge sixes, 110 for 1 in 10.4 overs, 48 needed by in just 56 balls। I think Rajasthan are into the final pretty much। जो कहते हैं ना कि 1 foot in the final, I think दूसरे फुट का भी आधा आ चुका है मेरे हिसाब से तो फाइनल में। So I think Rajasthan has done really well in this game। So let's talk about Rajasthan's bowling। Yeah. Very impressed the way Sanju Samson, in the end, because I was expecting at least Yuzvendra Chahal to bowl 1 over very early। I think वो 3 ओवर बचा के रखे थे उनके, and even though he didn't pick up a wicket, but I think जो इकोनॉमी से उनने बॉलिंग करी लास्ट के उनके 2 ओवर्स, I think that has helped other bowlers pick up wickets as well। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा, brilliant second last over, Obed McCoy 17th and I think 18th and 28th डाला था उनने ओवर। So I think brilliant there as well। So
what do you have to say about Rajasthan's bowling as a unit? Because I feel the best spin unit in this year's IPL is with the Rajasthan Royals, and आज उन्हें wickets नहीं मिले. So their fast bowling unit has stepped up. So what do you have to say about that, Ankit? I think they got very few wickets, but at certain intervals और जो गैप में मिले वो सही इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि एक समय था कि 10 ओवर के बाद 70 पे एक था. अगर अच्छे क्रिकेटिंग और बैटिंग यूनिट के हिसाब से देखोगे तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट चांस टू एक्सेलरेट, बिकॉज आपके हाथ में विकेट होते हैं. बट सच तो ये भी है कि टी20 एक कड़वा गेम है, और इसमें उसी मोमेंट पे अगर आप विकेट खोते हो ना, तो नया बल्लेबाज आता है, फिर आपका करंट रन रेट भी 7 के आसपास होता है और आपको एक्सीलरेट करना होता है, तो दोनों चीजें मुश्किल होती है. और यही बात की रजत पटीदार भी गलत टाइम पे आउट हुए, देन दिनेश कार्तिक टुवर्ड्स द एंड आई थिंक शायद वो खेलते आखिरी बॉल तक तो शायद वो 15-20, बट जिस हिसाब से आरआर के लिए शायद 200 भी कम पड़ता बोल सकते, बिकॉज द वे दे आर बैटिंग इट डजंट सीम दैट कि 160 होता, वो तो बोलते कि 180 भी होता तो वी वुड लव टू चेस दैट. बट वापस क्रेडिट गोस टू, बिकॉज इफ यू लुक एट द बॉलिंग अटैक, प्रॉपर पास बॉलर है. मैं उबेद मेकर को अभी भी यंग बॉलर काफी ही हैज पुट इन हिज ऑल दैट टैलेंट या फिर एक्सपोजर, द वे ही फील्ड्स और द वे ही बॉल्स, but he's not a complete T20 bowler, at least in the depth, because we have seen him bowling that full toss. At times he goes for many runs. Somehow they have managed to click as an bowling unit, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट द स्पिन डिपार्टमेंट को आना पड़ता है, क्योंकि 30+ विकेट्स और अश्विन ने तो बल्लेबाज के साथ भी, अश्विन एज अ बैटर आई थिंक he too has been impactful. So all these things, now that's a final. अभी तो अभी आपको जीतना पड़ेगा, because now you can't look back, but सामने आपकी जो opposition है, I think होम सपोर्ट, होम ग्राउंड, फर्स्ट गेम एट द होम, अच्छी यूनिट है, मैन टू मैन मार्किंग नहीं यार, करोगे तो लाइक पता है नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कि दैट होम सपोर्ट एंड थिंग वो सब थोड़ा रहेगा, बिकॉज इन द एंड इट्स ऑल अबाउट हु प्लेज बेटर क्रिकेट. इंडिया में देयर कि राइट नाउ भी द मोस्ट ऑफ द सपोर्ट इन द स्टेडियम इज फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, लेट्स बी ऑनेस्ट. ठीक है, राजस्थान रॉयल्स कितने सपोर्ट दिखने, बट the players don't care about the support. They only care about winning the game, मेरे हिसाब से. तो I think they have it in their bag. और संजू सैमसन has made sure कि वनुंदु हसरंगा को वो विकेट ना दे अपनी. Okay, कि that is one achievement. And he's given it right away. Just given it. Just given. Okay, मेरा एक बॉल पीछे चल रहा था इसलिए. हाँ, वाह. I mean, I was praising the way he was defending the ball. This needs to change. Yeah, exactly. ये बदलना पड़ेगा. Yeah, completely agree निखिल यार, क्योंकि कितने बार हम बोलेंगे कि संजू सैमसन हैज one of the best batters in T20 cricket in India, but calm head की भी एक चीज होती है जो हम कहते हैं कि you need a calm head over your shoulders. तो आप मैच जीत रहे हो, why not finish it till the end, man? और मेनली यही है कि जब तक आप प्लेयर रहते हो, जब तक आप किसी के अंडर खेल रहे हो, इट इज समहाउ फाइन. बहुत बार हमने देखा है कि विद द टारगेट इन हिज ग्रास्प एंड एवरीथिंग गोइंग वेल, ही इज बैटिंग वेल, ही इज नॉट गिविंग अवे हिज विकेट, एंड ही सडनली प्लेज वन शॉट that it costs him like nothing. So जब आप कैप्टन होते हो तो अब आपको वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता उनका अगर वो एंड तक रहते विद जॉस बटलर, क्योंकि आपको पता है जॉस बटलर सीजन कैंपेनर है, वो इतनी आसानी से आपको विकेट नहीं देंगे, या फिर वो उनमें इतना ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसा यंगस्टर ब्लड नहीं है कि मेरे को 6 मार के फिनिश करना है, मेरे को 4 मार के फिनिश करना है. उनको बस मैच फिनिश करना है एंड तक, और उनको वहां पे रहना है टू मेक श्योर कि जो लास्ट 45-40 रन बचे हैं वो भी अच्छी तरह से निकल जाए. तो यही मैच्योरिटी लानी पड़ेगी संजू सैमसन को. और बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था पिच में, या फिर बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, और या फिर ही गॉट अ जाफा दैट it was an unplayable delivery. He just wanted to attack him for no reason, because you can knock around singles, and उसको पता था कि वो मैचअप है वानिंदु हसरंगा के अगेंस्ट. 5 बार ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, ये 30वीं बार था. So knowing that matchup, so putting pressure on the bowler is one thing, और putting unnecessary pressure on the bowler is other. क्योंकि जब आप नॉक अराउंड कर सकते हो सिंगल डबल के लिए, और नेक्स्ट दूसरी एंड पे जॉस बटलर जैसा प्लेयर इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, देयर इज जस्ट नो नीड, यू जस्ट नीड टू
see the ship through till the end. So situation के हिसाब से खेलना सीखना पड़ेगा और added responsibility लेना सीखना पड़ेगा संजू सैमसन को. Completely agree. I think ये बात हम हर साल करते हैं कि संजू सैमसन हैज टू डिलीवर, संजू सैमसन हैज टू प्रेशर सिचुएशंस में डील करते आना चाहिए, बट ही hasn't done that. सीजन आफ्टर सीजन वी आर सीइंग स्टार्ट अच्छा करते सीजन की ऑलमोस्ट आई थिंक पहले 6-7 गेम संजू सैमसन is in the top 3 of the orange cap list, and उसके बाद he's not even in the top 12 or 13 in the season. So I think that is something which Sanju Samson has to really work on, because you cannot play for India consistently if you are playing like this. Simple as that. Because let's face it, IPL is a platform to build budding Indian cricketers, and Sanju Samson always वो रेस में रह चुके हैं, हर साल उनकी बात होती है. राइट नाउ एज वेल संजू सैमसन को जब साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं लिया गया है अभी, तो आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच पीपल वर आस्किंग कि वेयर इज संजू सैमसन, व्हाई नॉट add him to the squad. But these are the kind of things which are very important when you play international cricket. Yes, franchise cricket है, you can say कि यार इतना costly नहीं होगा, but when it comes to international cricket, big stages, I think this could prove very very costly, and I think that is the reason Sanju Samson has been asked to just work on such stuff, but could be too late मेरे हिसाब से. तो Jay is saying, I really feel Ara's mentality of never giving up attitude after losing a game is the biggest strength this season. I think जो हम बात कर रहे थे ना कि आरसीबी में जो 4 प्लेयर्स हैं अच्छे, जिसमें एटलीस्ट 2 को चलना चाहिए, वो काम प्रॉपर्ली राजस्थान रॉयल्स ने किया है. ठीक है, बैटिंग में अभी अगर आज जॉस बटलर चल गए तो बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा भी चल जाएंगे. देन यू विल हैव अनदर यूजी चाहल और लाइक ओबेड मैकॉय टुडे टू सपोर्ट हिम. सो आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विंस टू T20 मैचेस. सो आई थिंक जो हम बात कर रहे थे, team performance, one of the best this season has been done by Rajasthan Royals. Yes, I mean because the fact is उनका ऑक्शन काफी अच्छा गया था, एंड द सेकंड थिंग इज संजू सैमसन की कैप्टनसी. आई थिंक इट हैज बीन इंप्रेसिव इन करंट सिचुएशन और स्पेशली एंड यू गाइस वर टॉकिंग अबाउट हिज बैटिंग. ऑफ कोर्स यार, आई मीन he should bat because इस साल भी आई मीन साधारण सीजन नहीं कह सकते, बट ही गोस एंड लाइक्स टू अटैक. बट उसके बाद 400 से ज्यादा रन बने, अच्छी बात है, बट थोड़ी मैच्योरिटी के साथ खेलते तो अभी भी एक खेल अगला फाइनल गेम है, शायद 500 रन भी बन सकते थे और शायद he would have felt a bit comfortable. बट अभी भी एक गेम है जो फाइनल गेम है. एज एन कैप्टन ही इज नॉट डन एनीथिंग बैड एज ऑफ नाउ, बट शायद एज एन बैटर ही वुड हैव लॉट, बिकॉज ये तो इजी सिचुएशन है, just anchoring the innings और half century भी मिलता है, because going into the final is something you want this thing. Sorry we are underestimating RCB, but the fact is यार ये practically नहीं हो सकता कि आप 44 डिफेंड करें unless something really big happens, but it's really not easy यार. I mean बॉलर्स के हिसाब से देखो यार, वो लोग आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट कि 13 अभी 8 ओवर का खेला 44 चाहिए आप, वेरी टफ. अनदर ईयर आई थिंक आरसीबी फैंस का भी ट्विटर, इंस्टाग्राम, दे विल बी डिसअपॉइंटेड, दे विल बी obviously they should be disappointed. I think जे यहाँ पे क्या पॉइंट कह रहे हैं कि संजू बैट्स एट अ डिफरेंट पोजीशन फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट इन इंडिया. आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी टॉक्ड अबाउट, क्योंकि वी हैव सीन अदर प्लेयर्स एज वेल बैटिंग आउट ऑफ पोजीशन फॉर टीम इंडिया एंड डूइंग रियली वेल. ओके, there is the best example is Surya Kumar Yadav, in my opinion. Shreyas Iyer for a matter as well. Before, I think Surya batted at number 2 at either as an opener or at number 3 for Mumbai throughout his career. Okay, and I think when he came to India number, I think number 5 is now his slot. So he has done well at number 5 as well. Not for India even. इस साल कितने बार मैंने देखा he came to bat at number 5 and for MI as well, really managed to score some crucial runs and maybe काफी जान जो बोलते हैं ना middle order की. I think he was for India and as well as for the Mumbai Indians this year. So तो ये तो नहीं बोल सकते because वो मानसिकता definitely अच्छी है कि you want to score that impactful runs, but at the same time you need to ensure कि you will also finish the games because you are batting exactly at a very good position and top position जो number 3 है. So hopefully some more innings he can stretch his innings and get to the big scores he wants. Exactly, completely. क्योंकि जब भी आपको चांस मिलता है ना, क्योंकि there are so many people running for that India cap and number 3, 4, 5 कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा जब भी आपको मौका मिलेगा. एंड आई थिंक संजू सैमसन hasn't done that. आप हर बार बोल सकते हो because I remember संजू सैमसन debuting for India in 2017 or 18 if I'm not wrong, in 2015 in T20 cricket. Yes, in Zimbabwe, I guess. Okay. So maybe comeback was in 17 or 18. Comeback right. was in 17. Yes. Yeah, sorry. Yeah, so I think you still have to produce runs season after season. You cannot just say कि यार मेरी position नहीं है वो batting करने की. That's the reason Sanju is struggling. A lot of players have batted out of position. Virat Kohli, when he came into the Indian team at a very young age, I think he was
first selected as an opener in Sri Lanka, and then he was asked to bat at different position in the Indian team at a very young age. So I think you have to adjust to those conditions, and you cannot, because this is international cricket we are talking about. और ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपने पूरी जिंदगी भर आपने 4 नंबर या 3 नंबर में बैटिंग करी है, then you cannot bat at any other position. You have to do that क्योंकि this season संजू सैमसन ने भी अलग जगह अलग नंबर्स पे बैटिंग करी है. He's batted at 3, 4, 5, 6 at every place. So I think Yeah. you cannot come up with this reason that he for the India in the Indian batting order he bats not at his position or at his usual position. Nikhil? Totally agree. यस डेफिनेटली. और मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा क्योंकि जब 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 संजू सैमसन को मौका मिला है तब तब उनको ऐसे पोजीशन पे बैटिंग करने का मौका मिला है जहां पे वो यूज्ड टू है. Many times I've seen him being pushed at 3 in order for him to express himself. I recall in New Zealand he was pushed to open the innings, Yeah. so because like playing him at 5, 6 did not quite work. Then in Sri Lanka, he went. He was batting at 3 in ODI cricket and in T20 cricket, if I'm not wrong. And everyone expected that Suryakumar Yadav will bat at 3, but he instead he was pushed down, and Sanju Samson was there at 3. So it is about capitalizing, and Jay rightly has mentioned that Sanju hasn't capitalized on his call-ups for India. Yes, his role has been to be enforced and score as quickly as possible. But when you get to a start, let's say if he gets 5 games where he get 5 games out of which he gets to 3 starts, so he has to convert them into 350s. So if he has converted them into 350s, then it will be very good for him, and then the management will consider him for chances, so that they think that we have sent him for the role of enforcer, and he's doing it and also scoring consistent runs. So yes, it is very difficult to stay in scheme of things in Indian international cricket. But the players like Sanju Samson, who have this immense ability of hitting sixes and fours and scoring runs for fun, has to cash in, and I'm really looking forward to him cashing in on the opportunities when he gets the next. I'm very sure he'll get an opportunity in Ireland, if I'm not wrong. Yeah, but also the thing is कि if the Indian selectors have ignored Sanju Samson this time around, you will not be surprised if he's ignored again next time. Okay, Yes. so this is a signal from the Indian selectors as well कि you have to be consistent when scoring runs and not throw your wicket away like this. Yes, अपन कह सकते हैं कि यार one of the best talents in Indian cricket, one of the best free-flowing batsmen we have seen. Yes, for sure he is, but when it comes, he gets out at unexpected moments. That is the thing. अभी आराम से खेल रहे थे, कोई pressure situation नहीं था. Right now, I think they were needing 48 from 56. Now it's almost run a ball. Okay, so that Sanju Samson wicket has told कि जॉर्ज बटलर को कि यार मेरे को अभी थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, संजू आउट हो गया. ओके, सो अगर वो टाइम पे संजू सैमसन थोड़ा दिमाग लगा के खेल लेता, आई थिंक दिस गेम कुड हैव बीन प्रीटी क्लोज एंड ऑलमोस्ट डन टिल नाउ. सो थोड़े कमेंट्स भी ले लेते. आई थिंक काफी लोग प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर रहे हैं. यस, लाइक रायन इज सेइंग कि प्रसिद्ध कृष्णा हैड अ ग्रेट कमबैक दिस गेम. इट्स अगेन दैट टॉप 2 इन द फाइनल्स. यस यार, ये तो होगा ही. तो इफ यू फिनिश टॉप 2 आफ्टर 14 game season, for sure you are the best side in the tournament. So you expect the best sides to make it to the final as well. And one of the odd games जो हो जाते हैं वो यूजुअली क्वालिफायर 1 में आते हैं, क्योंकि वो टाइम पे लगता है कि यार दूसरा चांस भी मिलेगा. सो आई थिंक दैट इज द रीजन थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं वो टाइम पे. Jay Singh, very wise example for a balanced innings is Sky. Love the way he scores the flow of runs, consistent, keeps going when required. Sanju should learn from this. Exactly. Proper comparison, I think, Sanju Samson के लिए कि Suryakumar Yadav has been asked to bat at different positions for Team India. And जब आपके पास well settled openers है in KL Rahul and Rohit Sharma and other people, you will not move them to number 3 and number 4. Because we saw Rohit Sharma moving down the order for a T20 game recently, and that didn't work for sure. Rani Singh, should India make the separate T20 squad? The players playing all formats are mixed up when they play T20. Yeah, we have seen this happen before, and we have discussed this. And let's keep this discussion for some other time, because it's a big discussion. It's not a 2-minute or 3-minute discussion. So Ryan will get back to this. Ryan is saying some players suit T20 only. Sanju and Tripathi are obviously made for it. Yes, talking about Rahul Tripathi,
Very sad to see him not being in the lineup. I expected Rahul Tripathi to be a part of the South Africa series because he deserved it. If there is one player who deserved to be in that India lineup, was Rahul Tripathi. Nikhil? जी हाँ बिल्कुल एंड the surprising thing was that Rohit Sharma and Virat Kohli both are unavailable, Yeah, and the guy who bats three when in Virat Kohli's absence, who is Surya Kumar Yadav, you ideally expect him to bat three. Even he is not available. So after all that, if you can't make room for Rahul Tripathi, then also then there's something wrong with the selection process or the selection thinking. I think they've gone with the squad which they thought they had picked in against West Indies and Sri Lanka, and not considering much of the IPL performances. But then it becomes slightly biased because you've picked Dinesh Karthik and Hardik Pandya yeah, on the exactly. basis of their IPL performances. So why not pick Rahul Tripathi and Sanju Samson? Even if Sanju Samson has been inconsistent, he has been scoring a lot of runs. He scored 400 plus runs, so he deserved to be being picked. Mm, सो राहुल त्रिपाठी को आइडियली मैं भी देखना चाहता था कि वो नंबर 3 पे स्कोर करे, क्योंकि ही इज अ वेरी बिजी प्लेयर, वेरी पॉजिटिव प्लेयर, डजंट हेट्स टू प्ले डॉट बॉल्स, और बहुत अच्छा एक बैकअप क्रिएट होता, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा फ्यूचर की ओर, exactly. क्योंकि बहुत ज्यादा साल नहीं बचे हमारे एलीट प्लेयर्स के लिए, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, इवन रविंद्र जडेजा फॉर दैट मैटर. सो इस अभी if not Rahul Tripathi is making the crack in this series also, I don't know when it is. बस Exactly. I क्योंकि hope कि वो स्काई जैसे बहुत लेट ना पिक हो, क्योंकि स्काई के yeah, पास भी बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है अभी जब yeah. वो पिक हुए. एग्जैक्टली एंड आई थिंक ये है ना कि नंबर 3 पे हाउ मेनी इंडियन बैटर्स आर देयर हु आर परफॉर्मिंग राइट नाउ. Okay, you cannot add Yeah. Virat Kohli to that list right now. So I think top of the list right now on form is Rahul Tripathi, and you can add Surya Kumar Yadav if you want because he did bat consistently till he was pushed down from for Mumbai Indians and India as well. So I think you should have thought about that as well. कि अगर हमारे पास बैकअप अच्छा रहेगा नंबर 3 का, so we will not have those doubts कि यार अगर अभी विराट कोहली फेल करे तो किसको खिलाए 3 नंबर पे. If you Yeah. have Rahul Tripathi already in the mix, you can just go like, yeah, हाँ चलो Virat is out of form, let's rest him and get Rahul back in. So I think all these things should have been considered because Rahul Tripathi, like Jay Singh, is exactly Sky 2.0, not called at the right time. And I think right now Rahul Tripathi is 29 or 30 something age wise. He hardly has Yeah. around 3-4 years left in him, and if you want to build a proper squad, then you need these players in the 11 playing consistently. But sadly, But no the Rahul thing is, Tripathi. just say, yes, I mean, totally, Tripathi deserved to be in the squad for the South Africa series. But the fact to ये भी है, जो picks किए, जैसे कि दीपक हुड्डा को pick किया है, या फिर श्रेयस अय्यर, I think they will be the ones who will be batting at number 3 or 4 probably in the upcoming series. क्योंकि उन्होंने भी अच्छा किया है. ऑफ कोर्स त्रिपाठी ने कुछ गलत नहीं किया, और मेरे हिसाब से इस बार मैं कहूंगा कि सिलेक्टर्स, आई मीन द सिलेक्शन वाज अ बिट फाइन, बिकॉज दीपक हुड्डा और श्रेयस अय्यर ऐसे प्लेयर्स थे जो श्रीलंका सीरीज खेल रहे थे, और आई थिंक श्रेयस अय्यर तो आउट ही नहीं हुए थे उस सीरीज में, एंड आई थिंक ही आल्सो बैटेड एट नंबर 3. तो आई थिंक द थिंग इज, बहुत सारे प्लेयर्स है, कैंडिडेट्स है नंबर 3 पे, तो किसी को पिक करना, जैसे कि अगर इस साल इस सीरीज में माफ करिएगा राहुल त्रिपाठी को पिक किया था, तो शायद होता कि श्रेयस अय्यर पिक नहीं होते, फिर वहां थोड़ी इनजस्टिस की बात होती. आई थिंक कोई ना कोई तो बोलते हैं ना, बकरा बनना ही था. एंड नॉट द राइट वर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक यही स्थिति है कि इतने सारे कंटेंडर्स है, जैसे आपने भी मेंशन किया, कितने सारे प्लेयर्स है, इवन संजू सैमसन भी अभी, जिन्होंने 400 ज्यादा रन किए इस साल. आई थिंक दिस वाज अ टफ सिलेक्शन फॉर द सिलेक्टर्स, बट आई थिंक वी कैन होप दैट कि त्रिपाठी जो आयरलैंड वाली सीरीज है उसमें मौका मिले. So because we need that backup as you guys mentioned, so hopefully Yeah. there we can see Tripathi, because Deepak Hooda भी अच्छे फॉर्म में है, let's not forget that, and he gives you that bowling option जो कि काफी टॉक्स में कि इंडिया को 6 बॉलर तो नहीं कह सकते, बट इट्स वेरी हैंडी व्हेन यू गॉट समवन लाइक दीपक हुड्डा हु कैन गिव यू दैट 4 ओवर. एंड इतना लाजवाब आईपीएल, आई थिंक ही टू डिजर्व्स, बिकॉज वो भी श्रीलंका सीरीज में थे, बट इनको बैटिंग नहीं मिली. सो होपफुली इस बार बैटिंग मिले, ही गेट्स टेस्टेड, so we will get to see how he can perform in the Indian colors. So let's see what happens. Upcoming times are really interesting to see.
या मतलब पता है क्या, राहुल त्रिपाठी इज दैट प्लेयर जिसको आप फ्लोट कर सकते हो, पता है, फ्रॉम नंबर 2, नंबर 3 टू नंबर 6 और 7, क्योंकि हर पोजीशन में केकेआर ने उन्हें यूज किया था, एंड दैट इज व्हाट केकेआर हैज गिवन आई थिंक द बेस्ट फ्रॉम राहुल त्रिपाठी की। उन्हें प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, बट बाकी टीम्स को सजेशन दे दिया कि ही कैन बैट एट एनी पोजीशन, एंड SRH have decided to bat him at number 3, and whenever he opens, then also he scores runs. So I think Yeah. you cannot keep a player like that out of contention for too long, and I think pretty soon he'll get that opportunity. We have seen जब भी players अभी for example South Africa series होगी, most of the time we'll see a pretty settled 11 playing all the 5 games. So बट I इसमें think अभिनव सबसे बड़ी बात है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है ऋषभ पंत। द फैक्ट इज कि क्या होता है कि इज नॉट अ यंगस्टर, आई वुड से इज नाउ एक्सपीरियंस यंगस्टर, आई वुड से, क्योंकि अब 4 साल हुए, ये तो उनका दूसरा साल है एज एन कैप्टन। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर बिकॉज एक ऐसा वक्त आ गया इंडियन क्रिकेट टीम में, इज व्हाट आई फील इन द T20 स्क्वाड इज कि हम चाहते हैं कि राहुल त्रिपाठी हो, स्काई हो, वी जस्ट वांट देमसेल्व्स टू फिट इन द 11, और चाहे श्रेयस अय्यर भी हो, क्योंकि इतने अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं। बट द फैक्ट इज ऋषभ पंत को नंबर 4 की स्पॉट दिया था, और मैं तो ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको ड्रॉप करो, बट आई वांट हिम टू प्ले नाउ द मैच्योरिटी इनिंग्स, बिकॉज इस साल कप्तान थे दिल्ली स्क्वाड में। आई होप सो कि काफी सारा एक्सपीरियंस गेन हुआ, बिकॉज ही विल गेट दैट लर्निंग एक्सपीरियंस। बट अभी वो जस्ट try to execute that and implement in a proper way, because अभी काफी सारे प्लेयर्स है। राहुल त्रिपाठी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, एंड वी डोंट वांट समवन लाइक ऋषभ पंत की वो खराब नहीं साधारण इनिंग्स खेले, और somehow we get spoiled, or it may damage our squad. We want him to play more mature innings, because we want him to be also in the race, because जितने सारे अच्छे प्लेयर्स उतना सारा हमारे लिए टैलेंट और फ्यूचर अच्छा होगा। बट दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट कि ऋषभ पंत अब तो वक्त आ गया कि अब आप मैच्योरिटी के साथ खेलो, बिकॉज शॉट्स है बट वर्क लेने की बात ही तो है, एंड दैट्स वेयर इज लैकिंग। सो फुली ही गेट्स मैच्योर्ड इन द अपकमिंग टाइम्स एज एन बैटर, बिकॉज वाइस कप्तान है अभी अपकमिंग सीरीज के लिए। like the captaincy, vice captaincy, the thing is yes, that is added pressure, but जैसे तूने कहा कि वो टाइम दूर नहीं है जब भी हम वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि राइट नाउ वी आर थिंकिंग कि यार कैसे विराट कोहली को टीम में फिट करें, कैसे रोहित शर्मा को टीम में फिट करें, वी आर थिंकिंग कि यार ये लोग तो फिक्स है टीम में, ओके, बट आई थिंक या बहुत जल्दी टाइम आने वाला है कि व्हेन वी विल गो कि यार शायद अभी टाइम नहीं है विराट कोहली को वापस टीम में लाने का, मे बी रोहित शर्मा टू नॉट ओपन विद व्हेन दे आर आउट ऑफ फॉर्म। सो आई थिंक यू हैव टू लुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल कि यस आगे का जो हमारा यस फ्यूचर है, हाउ विल दैट लुक। एंड उसी के साथ अपन थोड़ी स्कोर की बात करते हैं, मैच की हम थोड़ी बात नहीं कर पा रहे ज्यादा। इंटरेस्टिंग बन गया एक्चुअली। 127.2 एग्जैक्टली, एंड आई थिंक ये तभी इंटरेस्टिंग बन गया था जब संजू सैमसन ने विकेट दिया था अपना, कि वो टाइम पे इट वाज प्रीटी प्रीटी इजी फॉर बोथ की अभी संजू के आउट होने से अभी इवन जॉस बटलर इज थोड़ा कि यार मेरे को भी ढंग से आराम से खेलना पड़ेगा, ही इज नॉट गोइंग आफ्टर दैट बिग शॉट्स, मे बी he'll ask Devdutt Padikkal to do that, या but I think they बट have to somehow get over the line, man, कि यस Rajasthan Royals cannot lose from this position. 128 यस for 2 in 15.2 overs, needing 30 runs in 28 balls. बट द फैक्ट इज कि हर्षद पटेल का भी एक ही ओवर है, और ये तो हसरंगा का लास्ट ओवर है, तो इवन थोड़े इफ देर आर एनी रिस्क, और थोड़ा इफ दे फियर लास्ट 4 ओवर्स में शायद मोहम्मद सिराज आई थिंक ही विल हैव टू बॉल कपल ऑफ ओवर्स, क्योंकि हर्षद पटेल का एक है, हेजलवुड का भी आई थिंक एक ही ओवर है, सो दैट इज राइट फॉर देम। बट आरसीबी आई मीन एक और साल क्या कहें, हम तो न्यूट्रल है, हम तो वी डोंट सपोर्ट देम, बट इट एक्चुअली फील्स बैड कि अब क्या करें, अब इस साल तो सीएसके में भी नहीं था, तो डोर तो वैसे भी ओपन था। कब जाने, ऑफ कोर्स गुजरात हैव प्लेड, बट जो एक्सपीरियंस साइड से जो कितने साल जीती है, आई थिंक वो नहीं था, और एक गुजरात जैसी टीम अगर ये जीतती है तो एज एन आरसीबी फैन दे नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज एक नई टीम खुद का पहला साल खेलती है, दे गोन टू विन द ट्रॉफी, और या फिर इवन हम ये कह सकते हैं कि दे विल बी द रनर अप्स इन द लीस्ट सिचुएशन। और आरआर तो खैर अब इतने साल से खेल लेते, तो दे शुडंट बी डिसअपॉइंटेड, दे शुड बी आल्सो प्राउड, बिकॉज इतने साल बाद दे विल ऑलमोस्ट रीच द फाइनल। बट आरसीबी यार अभी तो शब्द भी कम पड़ गए कि क्या, क्योंकि फाफ डू प्लेसिस को अपने कप्तान बनाया, यू वेंट इन अ न्यू डायरेक्शन एंड won the same history, but the fact is you aren't progressing towards the direction you are looking for, towards the success you are नहीं देख, looking पता है for. क्या, द थिंग इज यस, आई completely agreed with what RCB decided to do in this auction, क्योंकि मुझे लग रहा था they needed a better captain just to relieve that pressure of विराट कोहली, बट हमें ये नहीं पता था ना कि विराट का इतना गंदा IPL चले जाएगा, ठीक है, हमें वो एक्सपेक्टेड नहीं था। आई एक्सपेक्ट, क्योंकि एक इंटरनेशनल कैप्टन जो
लिटरली 5-6 साल तक आराम से उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कैप्टनसी करी है. उसके बाद यू एक्सपेक्ट हिम टू डू वेल इन इंटरनेशनल इन IPL लेवल एज वेल. सो I think I thought that was a better decision by RCB, but sadly it backfired क्योंकि the other players didn't perform well. That is what I would say, आई including थिंक Tom बटलर Duplessis. सीम्स टू बी अभी उनकी नजर सारी शतक की तरफ है बिकॉज ऑलरेडी 88 एंड अभी वो जो वापस 900 रन का है मे बी पॉसिबल तो कह सकते हैं क्योंकि एक मैच रहेगा आपके पास आज आपने शतक मार दिया तो अराउंड 850 रन इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद वो नहीं तो नहीं बन जाएंगे. नहीं ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट बट दैट्स द लीस्ट ही कैन एक्सपेक्ट क्योंकि अगर आज शतक मार दिया 160 रन चेस करे तो उसमें जॉस बटलर ने शतक मार दिया मतलब तो इट्स अ बिट डेविड वार्नर को शायद ओवरटेक कर सकते हैं बट आई मीन अनदर टाइम you have to yeah, give but credit to Rajasthan because second for final sure, होगा for sure. उनका ना. Yeah, for sure. I think They will be happy with their performance. I think Rajasthan did really really well. Start जब भी उनको जीतने चाहिए थे मैचेस, they made sure that they win those matches. Okay, I think that is what Rajasthan did really really well in this competition. And right now, say yes, the Gujarat game, but let's not forget the qualifier one. It went down to the last over. 16 were needed of the 6 balls, Yeah. and it was that another bad over which cost Rajasthan the game. It's not like कि वो बहुत खराब क्रिकेट खेले हो मैच में, but I think Rajasthan deserves to be in the final, and But both the one Rajasthan and question, Gujarat. you know, yes, I mean Rajasthan, Gujarat दोनों टीमों ने अच्छा किया है. But the one question I think with Rajasthan Royals is कि वो back definitely कर रहे हैं रियान पराग को, but they aren't exploring him or they aren't using him in the 11 क्योंकि आते हैं नंबर 6 के अश्विन के बाद आते हैं वो विच इज आइडेंटिकली आई फील लाइक यार ये तो गलत है अगर आप बैटर को आप बैक कर रहे हो तो लेट हिम फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन. मैंने उस सीएसके वाले मैच में भी देखा कि अश्विन आए थे 5 पे आप भेज सकते थे रियान पराग को. लेट हिम ऑल्सो गेट what you know cricket is because you want a player to be in the tough situations and then the best will come out of him. अभी as of देख now मैं I ना think मैं it's just पता है क्या अंकित, मैं आई थिंक निखिल भी मेरे से यहाँ पे एग्री करेगा. आई डू नॉट disagree with them rotating between Ashwin and Riyan Parag. I kind of disagree when Sanju Samson is rotated for Ravi Ashwin and some another player, क्योंकि संजू yes I सैमसन. also agree in that हाँ नहीं, too मतलब मेरे but को चलेगा कि अगर अश्विन आ जाते हैं रियान पराग के पहले, कभी कभी आई एम ओके विद इट, बट यस नॉट एवरी टाइम आई वुड लाइक टू सी रियान पराग कम अहेड ऑफ सॉरी बट द अश्विन कम फैक्ट अहेड इज ऑफ हिम. इस साल शायद यही हुआ है कि अश्विन जितनी बार तो मोस्टली तो हमें अश्विन ने देखे एक ही मैच में वो जो इन्होंने आई थिंक क्या किया था आई एम नॉट सब्स्टिट्यूट किया था अश्विन वेंट बैक इन द डगआउट एंड देन रियन पराग वाज कॉल्ड टू रिटायर्ड हर्ट या फिर रिटर्न डिक्लेयर किया था. सो दैट वाज द सिचुएशन जहाँ पे रियन पराग आए थे. उसके अलावा एक भी ऐसा सिचुएशन याद नहीं आता है कि रियन पराग आए अश्विन के आगे बिकॉज ये तो गलत है. आप उनको एज एन बैटर खिला रहे हो और अगर आप अश्विन से नीचे बैटिंग कर रहे हो डेफिनेटली संजू सैमसन का भी वही सिनेरियो है बट द फैक्ट इज टॉप ऑर्डर उनका इतना अच्छा है वहां पे चलता है बट रियन पराग इजंट टेस्टेड दैट इज समथिंग विच हर्ट्स बिकॉज अभी तो क्योंकि इनके ऊपर बहुत बातें हो रही है द फैक्ट इज ट्रू तो बातें हो रही तो यू नीड हिम टू फेस इन द टफ सिचुएशंस और तभी पता चलेगा कि हमें भी पता चलेगा कि क्यों आप इतने टाइम से खिला रहे हो. अभी एज एन फील्डर खिला रहे हो तो आई फील लाइक टोटली रॉन्ग है क्योंकि बैटिंग डेप्थ कम करना उसमें से आप अश्विन को कभी प्रमोट करते हो 3 पे बैठते हो. आई थिंक दिस इज समथिंग दे नीड टू लुक आउट क्योंकि अभी तो फाइनल होगा. Yeah, I think Rajasthan has decided to end it in this over. And Josh Butler, पूरे this is what I like about Josh Butler. पूरे innings में the shot which he is known to play, the late scoop which he shuffles outside the off stump and tries to lift it over the wicket keeper, पूरे innings में नहीं खेला. Now when he knows कि pressure अभी नहीं है, बिल्कुल भी एकदम zero pressure है, now he's just towing around with the bowling and the fielding. So I think very well done to Josh Butler this season. To be honest, I didn't expect Josh Butler to score 800 plus runs in this season. And I think Nikhil, what were your expectations of Rajasthan Royals as a team this season? They had put up a very good squad. I think that last that fourth overseas option could have been used better or could have been used more consistent. You say when you put out a playing 11 in the first game and you decide the 4 overseas players, there's not much reason to change them
unless and until there's an injury situation. So I guess they missed out on that fourth utilization of that fourth overseas professional. But talking about Josh Butler, he's been doing well consistently, and it's not a surprise for me because he has been a T20 batting giant for the last few years since he started opening the batting. Rajasthan Royals, I remember in the season of 2019, 2018-19, if I'm not wrong, that he was batting at the lower order, and then he Yeah. was pushed up at the top of the order by the captain Ajinkya Rahane, and then that started a revelation of Josh Butler, the T20 batter. And I recall a line said by MS Dhoni last season during one post-match presentation that he said that going into the playoffs, if a person is doing well, it also becomes an individual game, because if you're doing well, you make sure that you continue to do well, and get those extra cushions for the team, so that once you're in form, you have to continue to do well. And Josh Butler has done exactly that. He blew off this team in the last 7 league games, but he's come back strong. He has redefined his form again, and it is just brilliant. You can argue that he's carrying Rajasthan Royals, but when you have a T20 giant like Josh Butler batting at the top of the order, he is the showmaker, and everyone else rotates around him. So excellent season for them, and the optimum utilization of bowling resources from Sanju Samson. You can argue that it was a big risk of going into just five bowling options with Rian Parag as the 5.5 bowling option, I can say, because he never bowls one, or he maximum bowls 2 overs and just um, gets Yeah. battered most of the time. So that was the faith shown by Sanju Samson in his five prime bowlers, and a brilliant season capped off with a brilliant win. I doubt that they should have won that game against GT, but they have come back really strong here. Yeah. Yeah, completely agree एंड अर्ली प्रेडिक्शन अगर कर सकते हैं अब तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं 10 रन चाहिए 3 ओवर में 7 विकेट बचे हैं हु इज गोइंग टू विन दिस ईयर्स आईपीएल Uh, I will अब go तो with ऑप्शन भी इजी अब तो तेरे पास 10 टीम में नहीं अब तो 2 टीम दे रहा हूँ मैं yes, I mean that's true. But वाकई में क्रेडिट देना पड़ेगा because we thought RR will make it to playoffs, but किसने ये नहीं सोचा था कि गुजरात आएगी. So I'm going with Gujarat because home team है. It will be a special feeling. I predict also and also I want them to win because अगर RR जीत गई तो थोड़ा बुरा लगेगा. क्योंकि सामने वाली टीम फर्स्ट सीजन खेल रही है बट आरआर ने भी यही किया था फर्स्ट सीजन में जीती थी आईपीएल. तो कुछ भी हो सकता है फाइनल से यहाँ पे सारी वो काफी सारे मैंने बहुत बार देखा एक्सपर्ट्स यही कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है यहाँ पे सारे प्रेडिक्शंस फेल है. आई विल गो विद गुजरात बट लेट्स सी मे द बेस्ट टीम विन एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स बट आरसीबी. निखिल निखिल व्हाट अबाउट यू Uh, I'd have to go with Rajasthan Royals because I believe going into a final, a big match like that, even if you have one more experience or one match experience more than the other team, it counts. And it's all about experienced campaigners in your side. I don't say that Gujarat Titans don't have that experience, but uh, Rajasthan have a better bowling unit than them for sure, and they have good bowlers in Ravichandran Ashwin, Yuzvendra Chahal, in Trent Bolt. If he clicks in that opening over or that power play, he can turn the game on its own, as we have seen in his MI days last year or last year. So it's all about playing well on that given day. But I guess I will have to go with Rajasthan Royals for a simple reason that they have the experience and they have the quality to win this year's IPL. या एंड अभिनव सर आप बता मैं दो भी इट्स 1-1 इन पता है पैनल. क्या नो इवन I'll go with the Rajasthan Royals as well only because I was very impressed with the way they have played tonight. Okay, अगर आज वो प्रेशर सिचुएशन में फंबल कर जाते then I would have seriously doubted Rajasthan Royals campaign, but this time around I think it's written in the stars for Rajasthan Royals. They mentioned it before, I think during the IPL they want to win it for Shane Warne.
and I think this is going to be a victory dedicated to him, as well as if they win the tournament as well. So Yeah. I think it will be a great game for sure. It will be a Yes. great final, because जब भी ये दो teams खेली, we have had some good games, and Gujarat in their home stadium, their own crowd, like you mentioned. Even though I don't believe franchise cricket में crowds matter much, but I think I'll go with the 60-40 Rajasthan Royals. बट शायद कितनी स्पेशल फीलिंग होगी, आप खुद का फर्स्ट सीजन है और फर्स्ट मैच वो डायरेक्ट फाइनल है. आई Yeah. मीन दिस साउंड्स रियली गुड. सो हाउ इट विल फील, आई एम श्योर कि एक स्पेशल फीलिंग होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट. आई एम श्योर कि गुजरात हो या फिर राजस्थान हो, दे विल बी प्राउड फॉर द टीम बिकॉज अच्छा परफॉर्मेंस किया है. बिकॉज काफी कम लोगों ने सोचा था कि ये टीम जाएगी डेफिनेटली, बट फाइनल खेलेगी. आई थिंक इट्स अ बिग थिंग एंड वी ऑल नो कि फाइनल खेलने की यू नो खेलनी एक बड़ी बात होती है, जीतनी हारनी तो वो आगे वाली बात होती है, वो तो होती रहेगी. और दोनों टीम्स रिस्पेक्ट ऑफ हू विंस दे शुड बी प्राउड ऑफ द टीम. और यहाँ से एक अच्छी बिल्डिंग, और ये हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है बिंग सीएसके एंड एमआई फैंस की. अभी कंपटीशन आया है, अभी तो अपना गेम भी अब ऊपर जाना चाहिए. अपने को भी अगले साल वापस अच्छा करना है एंड मेक इट टू द प्लेऑफ. सो मे द बेस्ट टीम विंस, विश देम द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एंड द फाइनल मैच. And I One think the run to best go. Butler 100, 1 run to go. 4 needed of If he finishes 13 off balls. with a 6, it will be incredible. Yeah, and he deserves this century. I mean, Yep. no one expected out of 158 an opener. 100. Yes, Josh Butler, he'll score 75% There of it the is. runs, There it is. and he does it. Yes, 400, if I'm not wrong. 400 or 500? फोर्थ 400. 400. Oh, okay. तो चलो कुछ तो रिकॉर्ड मैच किया उन्होंने विराट कोहली का. सो राजस्थान रॉयल्स वेरी वेल डन. Just Brilliant to be win. fair, that 973 in a season, Yeah. I don't think if even if you get 2 extra games, it is quite possible, because that was just really unreal. If you see Josh Butler, he has scored tons of runs in the first 7 games, but there comes a time when you fall off the rails, and Virat Kohli Yeah. just did not fall off the rails in the 2016 Yeah. season. So that's a record which everyone thought that just maybe the Butler could have taken on, but how much ever he has tried, he's just fell short again of around 100, 173 runs. So that's a big margin, even if he scored 800 runs. Yeah, बट लेट्स बी exactly. फेयर, आज से जो फैंस सबसे ज्यादा खुश रहेंगे अपार्ट फ्रॉम राजस्थान, आई थिंक दैट विल बी दिल्ली कैपिटल्स फॉर वन ऑब्वियस रीजन आफ्टर व्हाट हैपेंड Yeah. देम इन दैट एमआई गेम. बिकॉज उनके भी प्लेऑफ्स के चांस थे, फॉर अ मार्जिन दे वेंट काफी सारे डिसीजन, बट आई थिंक दे विल बी द टीम हु विल बी हैप्पी. बट आरसीबी नहीं फैंस यार, अभी पता है तो क्या, I don't think that was a team which will be happy. I think that was a team which will be more sad, क्योंकि they Yes, had that game in in their their grasp. pocket. Yeah, yes, exactly. And I think the decision making by Rishabh Pant in those situations, and the entire team management, not just the captain, but I think that cost them a playoff spot. If you know, you had 2 reviews left, if I'm not wrong, when Tim David was caught behind and उन्होंने review नहीं लिया था. You have to go with your gut कि यार शायद लगी है yeah, मेरे. As a keeper, you know कि शायद बॉल हिट हुआ है. There is no better yeah. player than the keeper or a bowler to know कि बॉल लगी है कि नहीं लगी है. So I think that cost them the game. Butler's finished And it I off think with a 6. it's Yeah. done and dusted. Stunning, Yes. stunning century. Stunning game. Wow. What a comeback. Brilliant game, and Rajasthan Royals has won by 7 wickets and reached their second final. And all the Rajasthan fans all over the country, and for that matter across the world as well, because we have seen this franchise do really, really well overseas as well. So I think Rajasthan Royals deserve all the credit for reaching the final. And hard luck, RCB. Wasn't your year again, but keep trying till you get there, man. I mean, what else can you tell RCB fans and the franchise की कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो आप आएंगे, क्योंकि आप फाइनल तक आए हैं. ऐसा नहीं कि आप फाइनल हारे, आप फाइनल तक भी नहीं पहुंचे, आप फाइनल तक आए हैं, आप अच्छा भी खेले फाइनल में, बट स्टिल यू एंडेड अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रिजल्ट. सो आई थिंक if it's not your day, it's not your day. Simple as that. And tonight wasn't RCB's day, but Rajasthan Royals very well done once again. Uh, totally two deserving finalists.
for sure Gujarat Titans and Rajasthan Royals, and one is a home side and one is a side which deserve to be in contention for the final. I won't say ki for sure jate final mein, but they deserve to be in contention for the trophy. So we'll have a new champion. Will we have a debutant champion? That is the question. Or will we see Rajasthan Royals lifting the trophy in the second final as well? So we'll find that pretty soon. We'll find it on 29th of May. 48 घंटे में हमें अपना विनर ऑलमोस्ट मिल जाएगा. So I think Yes. Indian fans, Indian cricket fans, and cricketing fans all across the world will be eager to see who lifts that trophy. Will it be Hardik Pandya for the Gujarat Titans, or will it be Sanju Samson and Rajasthan Royals? Probably captaincy wise, the two best captains this season have reached the final. So I think that Yes. also explains a lot. Thank you, Nikhil. Thank you, Ankit, for joining me. Thank you, everyone in the chat as well, for being a part of this show. Don't forget to subscribe to the channel and like the video. Also, don't forget to register on CHAMPHUNT. You have the link in the description. CHAMPHUNT is a brilliant one-stop platform for all the cricket lovers. Uh, Pretty much, you can talk with anyone about cricket day and night. So I don't think there's a better spot for talking cricket. It just takes 10 seconds. You have to register with the email ID and you're ready to go. So we'll see you guys back mostly tomorrow if we preview the final. But if not, we'll definitely see you on Sunday and do the watch along for the final. So do join in on Sunday. And till then, good night.